Please join me in welcoming Mr. Farhan Mallick to the stage. Assalamu alaikum everyone. My name is Farhan Mallick and today I'm the last man standing. इन्होंने मेरा बहुत सारा तारुफ कराया है, वैसे तो जर्नलिस्ट भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ. इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं. मैं जब यहाँ आया था आज तो मुझे दावत दी असफंदियार भाई ने और हमजा साहब ने कि आई हैव टू टॉक अबाउट माई पैशन विच इज़ स्टोरी टेलिंग. एंड मैं जब सुबह से यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज लोग सुना रहे थे, तो मेरे जहन में एक वीडियो आई, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. अगर आप लोग पहचान गए होंगे, एक मूवी थी 1994 में आई थी, अंदाज अपना अपना. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड इट. दिस कैरेक्टर वाज तेजा. ये सीन किसी को याद है इस मूवी का? याद है ना? इस मूवी के सीन में तेजा प्लान बना रहा है. तेजा प्लान बनाता है कि मेरा मुर्गियों का फार्म होगा, उसमें से अंडे निकलेंगे, अंडे बच्चे देंगे, बच्चों से कहानियां बनाएंगे. तो लेकिन फैक्ट ये है कि ये तेजा नहीं है, हम सब में एक तेजा, वी ऑल हैव अ तेजा इनसाइड ऑफ अस. एंड हाउ आई एम गोना जस्ट शो यू. इफ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. All right. I want you all to just bear with me for the next couple of minutes. The gentleman on your left is Tom Cruise. Most of you recognize him. On your right, it's Shah Rukh Khan. Correct? I want you all to pick one of them. कोई एक को pick कर लें आप लोग. Which one do you want to pick? Tom Cruise? The ladies want to pick Tom Cruise. Guys, आप सहमत हैं? चले आप शाहरुख खान इमेजिन करें. एक काम करें, आप लोग अपनी आंखें बंद करें. For the next 30 seconds, I want you to do this exercise. Close your eyes, everybody, and imagine that Shah Rukh Khan is wearing a red shalwar और उसके ऊपर उसने एक बनियान पहनी हुई है सैंडो, और वो आपके घर के किचन के अंदर बर्तन धो रहा है. Did you imagine it? Did you see it? You did? Fantastic. Now that's something only humans are capable of doing. Humans have the superpower of imagination. No other makhluk on this planet has the power of imagining whatever the hell we want. And that's what brings me to the topic of my presentation, which is stories. Now, it is because of this DNA of human nature that हम लोग एक दिन में 3000 डे ड्रीम्स देखते हैं. अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारे हम में से लोग किसी प्रेजेंटेशन के दौरान जोन आउट कर गए होंगे. वो सोच रहे होंगे अभी मुझे वापस कैसे जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. सो यू आर डे ड्रीमिंग. ऑन एन एवरेज जागती आंखों के साथ एक दिन में इंसान 3000 इस तरह के ख्वाब देखता है. हर ख्वाब में कोई स्टोरी होती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी हॉरर होती है, कभी रोमांस की होती है. But there are stories. We naturally consume stories. That's why whether it's the Quran, whether it's the Torah, whether it's the Bible, whether it's the Bhagavad Gita, whether it's any scripture, मतलब आप इलियाड को ले लें. मैं 2 साल पहले एहराम मिस्र गया, तो वहाँ पे एहराम मिस्र के सामने कुछ टेम्पल्स हैं. उन टेम्पल्स के अंदर दीवारों के ऊपर ड्राइंग्स बनी हुई थी. मैंने उनसे पूछा ये क्या ड्राइंग्स है, तो उन्होंने कहा कि these are stories of that time. People did not have a formal language, so they used to just draw things so that they could relate their experiences. That is why also a man जो नीले रंग का एक चुस्त सा लिबास पहनता है और उसके ऊपर लाल रंग की एक अंडरवेयर पहनता है और हवाओं में उड़ता फिरता है, उस इंसान को लियारी से लेके लॉस एंजलिस तक हर इंसान पहचानता है और जानता है. I'm talking about Superman. So we have a natural tendency to consume stories. अभी वो लामा के जो लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा था स्टोरी टेलिंग की बात बहुत कर रहे थे. So I totally agree with them, and especially Gen Z नहीं, हम हज़ारों सालों से स्टोरीज कंज्यूम कर रहे हैं. अब मसला ये है कि God knows this,
Hulu knows this, Netflix knows this, Apple knows this, Sony knows this, Nike knows this, and any brand who knows this makes big money as well. Now, what do stories do? That is important to ask. Stories karti kya hai? Why stories? So that's something I'm going to take you next to. Do you remember where you were on the 21st of October 2021? I have asked this question to hundreds of people. Most of the people don't remember where they were. But when I show them this video, which in an ideal world should be running right now, these are the 2 wickets of Shaheen Shah Afridi, and Nasser Hussain goes, they just cannot play him. Both openers are gone, they cannot play him. And as I show people this video, they remember everything about that day. They remember what they were wearing, where they were sitting, what they were doing, us din khane mein kya khaya tha. They remember everything about that day. And that is what good stories do. Good stories trigger emotions. And those emotions, in the back of your brain, there is a thing called amygdala, where memories and emotions are next door neighbors. So when emotions are triggered, memories are triggered. And that's why people remember things. That's what good stories do. I'll give you an example from another world. And thank God this time it's not a video. Okay, do you know this guy? Anybody? This guy is Vladimir Klitschko. He's currently the mayor of the capital of Ukraine, but that's not what he's known for. What he's known for is, okay, he held the world boxing heavyweight title for 12 years. He had a better win rate. Iske knockouts zyada the compared to who? He's a far better boxer than Muhammad Ali. All of his stats say that. But nobody thinks he's the greatest. Guess why? Because Vladimir has the stats, but Ali, he had the story. You see that all the time in your life. Google phone has a far better memory, has a much cheaper price, has a better software, better camera, better battery life. Acha? Give it a 30 seconds. We're getting it. Then I think we've moved on. Koi masla nahi. Arey, we had. But that's the point I was trying to make. Another interesting story that I came up with, I was speaking to Green Star people the other day. They came to me to help them with their birth spacing thing. And I presented them with a story about Taj Mahal. And I said, Taj Mahal should be your biggest picture. Is it running now? Guys, it's all right. I think we've moved on. Nayan, that's fine. Nayan, let's just move on. Koi masla nahi, koi masla nahi, koi masla nahi, koi masla nahi. All right. Okay. So, now this is very important. Let me just take you back. All right. Now you guys must be saying कि अच्छा भाई स्टोरी क्या होती है? एक चीज़ जो मैं बहुत हमदर्दी के साथ, इखलास के साथ आप सबको बताना चाहता हूँ. आप सब बड़े लोग बैठे हैं, बहुत खर्चा करते हैं मार्केटिंग पे और ब्रांडिंग पे. एक चीज़ को समझें. Good storytelling is not about your brand. It's about your consumer. Now I'm going to break down a very simple formula of all stories to you. Now you can take it and you can go home and apply it on a Bollywood movie, Hollywood movie, South ki movie, on any great brand, Nike, Sony, Apple, whatever, and this will apply. This is called the story handbook. Now every story has these 6 steps. It has a character, which is the hero or the protagonist. Let's not be sexist. He's a character. उस कैरेक्टर का एक मसला होता है
उस मसले को हल करने के लिए उसे एक गाइड से मुलाकात होती है। जो मेरी उम्र के कबले मसीह के लोग हैं तो शोले में ठाकुर था, और जो थोड़े रिलेटिवली नए लोग हैं तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट था। सर्किट चाहिए होता है हर प्रोटैगनिस्ट को, जो उसके मसाइल को हल करता है। अगर आप हैरी पॉटर आपने पढ़ी हुई है तो सीरियस ब्लैक वाज द गाइड फॉर हैरी पॉटर। वो गाइड क्या करता है, वो एडवाइस करता है प्रोटैगनिस्ट को कि उस मसले से कैसे निकलना है, उसको मोटिवेट करता है, प्लान देता है, हीरो उस प्लान पे अमल करता है, छठा स्टेप मंजिल को पा लेता है। चाहे वो हीरोइन हो, दुनिया को बचाना हो, किसी बम धमाके को अवॉइड करना हो, हीरो गेट्स टू डू हिज जॉब। आप कहां आते हैं एज अ ब्रांड? यू आर द गाइड, यू शुड नेवर बी द हीरो। इफ यू मेक योरसेल्फ द हीरो, दुनिया का लूजर तरीन इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, यकीन करें वो चाहता है कि मेरी यूनिवर्स का मैं ही हीरो हूं। दैट इज व्हाट हैज गिवन राइज टू द टिकटॉक इन दिस कंट्री। एवरीवन गेट्स टू बी देयर हीरो, एवरीवन गेट्स टू बी देयर ओन इन्फ्लुएंसर। वो अपनी छोटे से मोहल्ले का एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है, उसको उसके 50 लाइक मिल रहे होते हैं, ही फील्स लाइक अ हीरो। सो नोबडी वांट्स टू बी अ साइड कैरेक्टर। सो गुड ब्रांड्स, ग्रेट ब्रांड्स, नाइकी, Apple, they make their viewer, their consumer, the hero. Not so smart brands try to become hero themselves. Let's move forward. We don't have time. Okay. Now this is a stat I want to throw at हमारे अब्दुल सत्तार भाई बैठे हुए हैं। एक दिन में 24 घंटों में 300 billion pieces of content are now uploaded every day, and that was 6 months ago. 300 billion pieces of content. This is the data I took from Reuters Digital News Report. That's unfathomable. That's like in 1 minute, that's 40 crore units of data of content. जिसमें text messages हैं, WhatsApp messages हैं, Instagram posts हैं, stories हैं, you know, all kinds of things that go online. उसकी breakdown यहाँ पे है आपके 300 billion pieces. Now, what that does is, again, there was a video, I think that's why it stuck. That's a lot of noise for you. And that noise is killing brands. हर किसी ने अपना YouTube का पेज बनाया हुआ है, Instagram अकाउंट बनाया हुआ है, चीज़ें बनाई हुई हैं, ज़ीरो एंगेजमेंट है, बॉट खरीद के सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट देता है। एक बहुत बड़ा फैड चल रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई चीज़ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई चीज़ नहीं है, ये एक धोखा है जो लोगों ने आपको दिया है। The only SEO is good content. You make good content, the algorithms automatically promote you. If people like what you're producing, they automatically push you forward. There is no magic hashtag. You put in a lousy, boring content and it goes viral. It will never go viral. Why I know that? I'll share with you. So, every company has a product, but only great ones have a story. That is the most important thing to understand. And we as FireStarter, we are helping corporates communicate. We don't have big budgets, we don't have a big office, but what we are doing right now is we're just helping corporates communicate through the power of storytelling. Why would you would ask कि भाई आपको कैसे आता है ये? तो इसका एक proof of performance भी है हमारे पास, और वो है ये। I also happen to be the founder of RAFTAR. Now, RAFTAR is right now the fastest growing digital platform in the country. We have around 600,000 subscribers on YouTube, but that's not the key. The key is that our average view duration is over 15 minutes. That's better than Hum TV, that's better than Geo Entertainment. And we don't tell fiction. We tell real stories and people watch it. The head of Google Pakistan, YouTube Pakistan, Wali Tirmizi, he's from the city, came to visit us, and the first question he asked, वो हमारे कराची में एक होटल है, प्याला होटल, उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने चाय में अफीम मिला के लोगों को पिलाता था. That's why people used to love his tea. He came to me and said, Farhan bhai, what are you mixing in your content that people are watching this content for 15, 16, 17 minutes? My answer is just simple. We know how to tell stories. ये दुनिया के शुरू से लेकर आखिर तक रहा है.
पर्सनली बिलीव, और मेरा स्टोरी टेलिंग पे यकीन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे खुदा पे यकीन है और जैसे मेरा कुरान पे यकीन है. आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर ऑल द ब्रांड्स. और अब जो वक्त आ रहा है, अगर आपने जेनजी के साथ स्टोरी टेलिंग नहीं की तो फिर है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात. थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम. आई एम आउट.